Welcome back to our discussion of homeomorphism, equivalent matrix and isometry. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था होम्योमॉर्फिज्म और आइसोमेट्री को और हमने ये देखा था दैट हाउ आइसोमेट्री इज पावरफुल टूल देन होम्योमॉर्फिज्म। हमने वीडियो के लास्ट में ये भी देखा था कि किस तरीके से दिस आइसोमेट्री इज ऑलवेज ए होम्योमॉर्फिज्म बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. Okay, so we will start our lecture by writing this statement and giving some example regarding this. So what we have proved that every isometry is homeomorphism that we have proved, but converse may not be true. Okay, for example, if I say let me take the example जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए ही थे. जैसे if we say let x is equals to 0 comma 1 closed interval and y is equals to closed interval 0 comma 2 with usual matrix. Okay, then the function f defined from x to y as f of x is equals to 2x. so, हमने ये देखा था which is homeomorphism, है ना. But not isometry, right? क्योंकि for any x1 comma x2 from 0 comma 1, we can say if I identify in the usual metric, okay, f of x1 minus f of x2, that is same as 2x1 minus 2x2, and of course this is twice of x1 minus x2, okay, which is never equal to x1 minus x2 unless x1 is equals to x2. ठीक है, तो जैसे x1 और x2 इक्वल है तब ही ये हमें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज ये कभी भी फंक्शन की इमेजेस और पॉइंट्स आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, एंड टू बी द सिमेट्री f of x1 माइनस f of x2 मस्ट बी इक्वल टू x1 माइनस x2. तो हमने देखा था f of x is equals to 2x is homeomorphism, but here in this example you can see this is not an isomorphism. Okay, similarly, if you take x is the open interval 0 to 1 and y is the set of real number equipped with usual metric. Okay, again we have usual metric. Then what we can say, again metric, then the function f defined from x to y defined as f of x is equals to ln x. और ये हमने देखा था that this is a homeomorphism, but of course this is not an isomorphism, which is, ये हमने प्रूव किया था पिछले लेक्चर में, which is a homeomorphism but not an isometry. Okay, कैसे? if you identify f of x1
minus f of x2, then this is same as ln x1 minus ln x2, and of course using the property of ln, this is always non-negative now, so you can write this is ln x1 over x2, and this is never equals to x1 minus x2. ओके, सो कभी भी ln x अपने x के इक्वल होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस तरीके का ग्राफ है, ना कि इस तरीके का। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पर वैल्यू जो है वो x और y की इक्वल आती है, तो ये तो कभी कभी इसको टच करता ही नहीं है। तो वी कैन से दैट ln x इज नेवर इक्वल्स टू x फॉर एनी रियल वैल्यू। ओके, obviously this is defined for the positive value only, है ना। So here you can see this the difference of images is not equals to difference of point, and that's why this is not an isometry. अब इसी तरीके से जैसे हमने होम्योमॉर्फिज्म के लिए रिलेशन डिफाइन किया था, उसी तरीके से वी आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट दैट एन आइसोमेट्री व्हेन x and y are related by the isometry, then that relation is equivalent relation. Okay, so for metric spaces x and y, let x, now we are using this sign. ओके, यहाँ ये आइसोमेट्री के लिए है, और जब सिंगल हो वो होम्योमॉर्फिज्म के लिए है। मीन्स दैट x and y are isometric. Okay, then the relation, which relation? This isometric is an equivalent relation. जैसे हमने होम्योमॉर्फिज्म के लिए प्रूफ किया था, इन अ सिमिलर वे यू कैन प्रोसीड फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, एंड दैट इज अबाउट द इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। सो नाउ वी आर हैविंग डेफिनेशन, and this is 3.5.4, and this is going to be equivalent matrix. ओके, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को कब इक्विवेलेंट बोलेंगे, लेट अस आइडेंटिफाई दिस वन। ओके, सो लेट d1 एंड d2 बी मैट्रिसेस। हमने देखा था किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर हम एक से ज़्यादा मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं ऑन अ नॉन एम्प्टी set x such that for every sequence xn where n is greater than equals to 1 in x and small x in x, if we have that limit n tends to infinity d1 x and x is equals to 0, if and only if limit n tends to infinity d2 x and x that is also equals to true. दैट इज कि कोई सीक्वेंस अगर d1 मैट्रिक के साथ x पे कन्वर्स कर रहा है, तो चाहे अगर कोई हमें ऐसे मैट्रिक मिल रही है d2 जिसमें भी ये सीक्वेंस xn x पे ही कन्वर्स कर रहा है, एंड इफ दिस इज ट्रू फॉर एवरी सीक्वेंस, देन वी कॉल दैट d1 इज इक्विवेलेंट टू d2. ओके, दैट इज sequence converges to x in
x comma d1 if and only if it converges to x in x comma d2. Okay, and in that sense we say that d1 and d2 are equivalent matrix on x, and that x comma d1 and x comma d2 are equivalent metric spaces. तो जब भी हमें किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को D1 और D2 को इक्विवेलेंट बताना है, वी नीड टू कंसीडर अ सीक्वेंस, और हमें ये देख रहे हैं एनी सीक्वेंस, एनी आर्बिट्ररी सीक्वेंस, और देखना है कि दोनों ही D में, दोनों ही मैट्रिक में जो भी लिमिट है दैट शुड बी इक्वल. अगर अलग अलग लिमिट पे कन्वर्स कर रहा है व्हेन टेकिंग द डिफरेंट मैट्रिक्स, देन we say that both the matrices are not equivalent. Okay, now here it should be noted that this x is always in a common, in the sense that this d1 is defined on this x, this d2 is also defined on this x. Okay, so जो भी हमारा under consideration non-empty set है, that should be same in all case where we want to discuss the equivalency of two matrices. ओके, सो दिस इज अबाउट द इक्विवेलेंसी ऑफ टू मैट्रिक्स. अब हमने ये देखा था कि जब हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन डिफाइन की थी तो हमने कहा था कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंट है, तो अगर हम इसके एफ एन इमेज आइडेंटिफाई करें तो ये भी कन्वर्जेंट होना चाहिए, राइट. एक्स एन के कन्वर्ज होने पर इसकी एफ इमेज वाला जो भी सीक्वेंस है दैट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, देन we call that this function f is continuous. Okay, now क्योंकि फंक्शन का कन्वर्जेंस f की कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है, तो क्या हम, अच्छा यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन के कन्वर्जेंस को तो डिफाइन किया है, बट यहाँ पर f ऑफ एक्स एन अगर हम d1 और d2 दो अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक्स एन के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है d1 से d2 में कि एक्सन की इमेज एक्सन पर ही जा रही है. इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी मैप है. ओके, तो हम दूसरे तरीके से आइडेंटिटी मैपिंग के थ्रू भी एक इक्विवेलेंट मैट्रिक के बारे में बात कर सकते हैं. ओके, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूटी को सीक्वेंस के कन्वर्जेंस से रिलेट किया था, एंड हियर वी हैव द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, then using the bonding between continuity and convergence we can give the definition of equivalent matrix by the continuity of identity function. Okay, क्योंकि मान लेते हैं कि ये कोई एक्स एन रहा होगा तो इसकी एफ इमेज वापस एक्स एन आ रही है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैपिंग ही है. सो लेट मी राइट this remark, and this remark is remark 3.5.5. and what is this remark? That the definition of equivalent matrices in form of continuous identity mapping. तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेट मी राइट दिस. सो टू मैट्रिक्स d1 and d2 on a non-empty set x are
equivalent if and only if the identity map that is suppose हमने ऐसे डिफाइन कर दिया I12 that is x comma d1 to x comma d2 and I21 and that is from x d2 to x क्योंकि if and only if condition है that's why we are writing both side identity map okay are both continuous okay that is if and only if the identity mapping from x comma d1 to x comma d2 is homeomorphism. ठीक है सो अगेन जब हम बात कर रहे हैं कि D1 और D2 दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक है तो बेसिकली हमें इस तरीके के दोनों आइडेंटिटी मैपिंग की कंटिन्यूटी चाहिए और ऑफ कोर्स जब हम इस तरीके के आइडेंटिटी मैप डिफाइन कर रहे हैं तो बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर और जब हम फंक्शन और उसकी इन्वर्स इमेज की कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट आता है होम्योमॉर्फिज्म का तो अगर ये आइडेंटिटी मैप होम्योमॉर्फिज्म है फ्रॉम एक्स डी वन टू एक्स डी टू तब हम कहेंगे दैट डी1 इज इक्विवेलेंट टू D2 अब जब होम्योमॉर्फिज्म है तो हमने देखा था कि ओपन सेट पर ही मैप होते हैं क्लोज्ड सेट पर मैप होंगे और इसी तरीके से हम इसी चीज़ को अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में पढ़ें तब D1 D2 मैट्रिक्स अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं तो दोनों ही मैट्रिक स्पेसेस में ओपन सेट आपस में कॉरेस्पॉन्ड होते हैं इन दी बोथ दी मैट्रिक्स ओके